Hello students, let's continue with GST. Question number 22. In the new book, this question number 22 is not there. Okay, but it is an important question. That is why I am solving it. Those who do not have, those who have the new book, they also pay attention. This question will help you. The question says, I am reading the question for you. A shopkeeper sells a mobile at a mark price of 7250. So that means the mark price is 7250. The rate of GST is 12%. Rate of GST. If the shopkeeper pays a GST of 150 rupees to the government, so there is a shopkeeper, okay, and they have told that the mark price of the mobile phone is 7250. Okay, shopkeeper pays a GST of 150 rupees. What was the price inclusive of tax at which the shopkeeper purchased the mobile phone from the wholesaler? So shopkeeper purchased the mobile phone, and shopkeeper, in the first sentence, the first statement of the question said shopkeeper sells a mobile phone at the mark price, means he sells the mobile phone at the mark price to the customer. So sell किया है mark price पे, ठीक है. Buy कौन से price पे किया है, we don't know. What was the price, sale price of wholesaler, we don't know that, but we know the GST. Okay, this is similar to the question number 18 and 19, the last two questions of the previous video. It is similar to that, but there are only 3 to 4 questions based on this type. That is why I am discussing this question also. So wholesaler, shopkeeper, customer. Shopkeeper sells to customer at this price. He buys. What is the cost price for shopkeeper? We do not know. Okay, so let's find X first, and then we have to find the price at which the shopkeeper purchased the article inclusive of tax. Okay, I have always told you, shopkeeper ने अगर buy किया है X price पे, तो जब वो पैसे पे करेगा तो it will be X plus GST, price paid by shopkeeper. ठीक है, तो पहले X ढूंढ लेते हैं और फिर उसमें GST ऐड कर देंगे. तो let's find X first. So shopkeeper is a middleman. So what is the profit of shopkeeper? Profit of shopkeeper is 7250 minus X. Now the GST paid by shopkeeper to the government. GST paid by shopkeeper to the government is 12% of his profit. Okay, but this GST paid by shopkeeper to the government is already known to us, that is 150. So GST is 150. Okay, 12% of 7250 minus X. Now this 100 will go here, 12 will come down. Now divide this 15,000 with 12. You will get the answer as 1250. So X is 6,000. That means wholesaler sold the article at 6,000. Now shopkeeper, the price paid by the shopkeeper will be 6,000 plus GST on 6,000. Okay, so what is the price paid by shopkeeper? I have repeatedly told you that price paid means the sale price plus GST on sale price. Okay, so sale price is 6,000 plus 12% of GST on 6,000.
This is your answer. Next. Now the question number 23 in the old book. Again, this question is not there in the new book. This is a very easy question. Okay, very easy question. You should do it on your own. Very, very simple question. Now the question number 24. In the new book, it is question number 9. Rao. Very simple question, but new type of question. What does this say? When Rao ordered some medicine, the bill was 840 rupees, which included 12% GST. Okay, bill was 840, which included 12% GST. What was the price of the medicines before tax? So, what is the price of medicine before tax? Understood the question? Okay, so let the price be X. Okay, which price? They are talking about the sale price. Okay, now this is the amount including the tax. Okay, so price including tax means whatever the sales price is, okay, plus 12% GST on that sale price. So 12% of that sale price. Okay, so we know that the price including tax is 840. The price including tax is 840 equals सेल प्राइस को हमने x लिया है जो पहले प्राइस थी, ठीक है, उस पर 12% टैक्स लगा है और वो मिला के 840 रुपीज़ हुआ है. ओके, समझ रहा है? जो पहले की प्राइस थी विदाउट टैक्स, आप जो प्राइस देखते हो विदाउट टैक्स, दैट इज़ x. ओके, फिर उस पर 12% टैक्स लगाया, उसको ऐड किया एंड टोटल बिल कितना बना? 840 रुपीज़. ओके, now how to solve this? 840 equals, take LCM, this will become 1112x upon 100. Now cross multiply. So I'll just do one step here. 840 into 100 upon 1112 equals x. Now do this cancellation. You will get the answer as 750. Okay, the value of x will be 750. Very small question. This is a 2-mark question which can come in section A. कि इंक्लूडिंग प्राइस दे दिया है कि इंक्लूडिंग प्राइस 840 है, तो जो सेल प्राइस प्लस 12% टैक्स दोनों को मिला के होता है इंक्लूडिंग टैक्स वाला प्राइस. नेक्स्ट. Question number 25. In the new book, it is question number 16. Now, question number 25. The mark price of the mobile is 9,000. So the mark price is 9,000 and the rate of GST is 12%. A shopkeeper buys it at a discount and sells it to the customer at mark price.
Okay, so they are saying that shopkeeper buys it at a discount and sells to the customer at marked price. मतलब ये शॉपकीपर है, ठीक है, उसने कितने पे बाय किया, वी डोंट नो दैट प्राइस. ओके, बट ही सोल्ड टू द कस्टमर एट मार्क प्राइस. ओके, एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग यू कि उसे कितना डिस्काउंट मिला था शॉपकीपर को. तो अगर ये प्राइस मुझे मिल जाएगी तो ये प्राइस देख के मैं बता दूंगा मार्क प्राइस से कंपेयर करके कि कितना डिस्काउंट मिला है. ठीक है, तो पहले ये प्राइस ढूंढना ज़रूरी है, द प्राइस एट विच शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have the mark price 9,000, 12%. Shopkeeper buys it at a discount and sells it to the customer at the mark price. If the shopkeeper pays a GST of 72 rupees. Now in new book, this value is 36. Okay, this see, सिर्फ हाफ कर दिया है. ये चेंजेस करते हैं सिलेबस में, खाली नंबर को चेंज कर देते हैं, न्यू बुक बना देते हैं. एनीवेज, इन द ओल्ड बुक इट इज़ 72, इन द न्यू बुक इट इज़ 36. तो मैं आपको दोनों कैलकुलेशन बता दूंगा करके, वैसे यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो. जो न्यू बुक है उसमें GST 36 दिया है एंड ओल्ड बुक में इट इज़ 72. सो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? इफ द शॉपकीपर पेज अ GST ऑफ 72 टू द गवर्नमेंट, फाइंड द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. सो मतलब पहले ये प्राइस फाइंड करनी है, फिर उसमें टैक्स ऐड कर देंगे. ठीक है, सो ये प्राइस कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट, शॉपकीपर्स प्रॉफिट. शॉपकीपर्स प्रॉफिट विल बी 9,000 minus X. Correct. Now GST paid by shopkeeper to the government. Okay, so what will be the GST paid? It will be 12% of the profit. ठीक है, सो क्या होगा? 12% इंटू प्रॉफिट कितना है? 9,000 minus X. Okay, and the GST paid to the government, that GST is already given, is 72. So you can write here 72. Okay, those who have new book, make this statement like this. And then cross multiply this 72 into 100 upon 12 equals 9,000 minus X. So 12, do this cancellation, 70 to 100 divided by 12, you will get 600. So X is equals to 9,000 minus 600, that is 8,400. Okay, and for these 3,600 अगर होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 300 आ जाएगा. सो दिस X विल बी ओके. सो जिनके पास न्यू बुक है उनका X की वैल्यू आएगी 8700. ओके, सो सो 8,400 में लिया, 9,000 में बेच दिया. ठीक है, और 36 के हिसाब से अगर कर रहे हो तो 8,700 में लिया, 9,000 में सेल किया. नाउ दिस वाज द प्राइस. दे आर आस्किंग अस द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. तो शॉपकीपर ने कितना प्राइस पे किया होगा? 8,400 प्लस GST ऑन 8,400. करेक्ट, यहाँ पे 8,700 प्लस GST ऑन 8,700. ठीक है, दैट इज द प्राइस पेड. वही होता है प्राइस पेड. Price paid by the shopkeeper will be 8,000 plus 12% of 8,000. Oh, sorry, not 8,000. 8,400 है ना. So 8,400 plus 12% of 8,400. Okay, और जिनके पास न्यू बुक है, it will be 8,700 plus 12% of 8,700.
Copy this. When you calculate this, 84 into 12, you will get 1008. So this answer will become 9408. Now the problem is, in the new book the question is changed. उन्होंने क्वेश्चन तो चेंज कर दिया, ठीक है, बट टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर चेंज करना भूल गए. सो उन्होंने आंसर यही रखा है अभी तक, ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन यू शुड गेट सम डिफरेंट आंसर. सो यही प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की. सो व्हेन यू कैलकुलेट you should get the answer according to the new sum. The answer should be this, but in the textbook they have given this answer, in the new book also. Okay, so that is why actually I am solving this chapter from the old book, because the old book is better compared to GS. In the new book they have made changes, but they have done small errors, like question तो change कर लिया, 36 बना दिया, but answer वही same रखा है जो यहाँ पे था, ठीक है. So those who have new book just make this correction. चाहिए तो पीछे आंसर चेंज करके ये आंसर लिख दो, ठीक है. So when you practice you won't face any problem. और in the textbook you can make the change. जहाँ पे आपको 36 दिया है उसको 72 कर दो, ठीक है. Now there is one more question asked, that is the discount received by the shopkeeper. शॉपकीपर ने शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला. ओके, सो सी, शॉपकीपर हैज परचेस्ड द आर्टिकल इन 8400, करेक्ट, 8400 में उसने लिया, बट मार्क प्राइस क्या थी, 9000. मीन्स मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिला शॉपकीपर को, 600 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, करेक्ट. अगर न्यू बुक वालों के देखेंगे तो 8700 में लिया, मीन्स 300 का डिस्काउंट मिला, ठीक है. बट इसका भी आंसर पीछे ओल्ड बुक का ही दिया है आंसर, ठीक है. सो जस्ट आप लोग भी इस वैल्यू को यही समझो एंड सॉल्व करो. देयर आर लॉट ऑफ एरर्स इन द न्यू बुक. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज मार्क प्राइस was 9000, okay, and shopkeeper bought at 8400. ओके, सो उसको डिस्काउंट कितना मिला. डिस्काउंट रिसीव बाय द शॉपकीपर इज 9000 माइनस 8400, दैट इज 600. उसे डिस्काउंट मिला 600 रुपीज़ का. तो इसको परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज का, डिस्काउंट परसेंट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट परसेंट. ओके, कैसे याद रखेंगे, जो डिस्काउंट मिला है किस वैल्यू पे डिस्काउंट मिला है, मार्क प्राइस पे. सो अपॉन 9000 इंटू 100. ओके, व्हेन यू कैंसिल दिस, 60 अपॉन 9, दिस विल बिकम 62 अपॉन 3%. ओके, दिस विल बिकम 62 अपॉन 3%. जिनके पास न्यू बुक है उनके हिसाब से ये 300 अपॉन
9,000 होगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका ये चेंज हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। Those who have new book, you will have this calculation. You will have the answer 10/3. In your book, the answer should be 1/3%. This is the answer for the old book. So this was the third part of the question. Next question. Question number 26. In the new book, it is 17. In this sum, the mark price of the computer is 30,000. This sum is again based where you have to find the discount percent. These are those type of sums. Okay, so the mark price of a computer is 30,000 and the rate of GST is 18%. The shopkeeper buys it at a discount and sells it to the customer at mark price. So shopkeeper sells it to the customer at mark price. Okay, we don't know at what price he bought the article from the maybe wholesaler. Okay, if the shopkeeper pays 1080 rupees as GST, so the GST is 1080 rupees. Okay, in the new book it is given 540. They have changed the question, but they have kept the answer as same. Answer based on this. So it is better you cancel this 150. The new book students cancel this 150 and make it 1080. Only then you will get the right answer. Problem is they have changed, updated the textbook. Questions को update कर लिया है, but पीछे answers को update नहीं किया है, तो इसीलिए बहुत issues है. Okay, so this is the question now ready. Question is ready. Now we have to find the price paid by the shopkeeper inclusive of tax. Okay, so अभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ गया कैसे करते हैं. First, shopkeeper is the middleman. So what is the shopkeeper's profit? 30,000 minus X. Now the GST by shopkeeper to government is 18% of his profit. So what is his profit? 18% of 30,000 minus X. Okay, and the GST of by shopkeeper to the government is already given, that is 1080. Okay, now I want you to do this calculation on your own. Okay, pause the video, do this calculation. Okay, multiply this 1000 here, 100 here, 18 will come down, do the cancellation, then shift the numbers, do this cancellation. Your answer should be 24,000. Okay, so here the value is 24,000. That means shopkeeper ने लिया 24,000 में. So what will be the लिया 24,000 में, मतलब ये उसका सेल प्राइस था फॉर द शॉपकीपर. ओके, प्राइस पेड बाय शॉपकीपर. मैंने आपको हमेशा बताया जो वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं इस डायग्राम में,
इस फ्लो चार्ट में, those values are never the final answer. Price paid by the shopkeeper will be 24,000 plus tax. Okay, so it is 24,000 plus GST on 24,000. Okay, that is 18% of 24,000. Your answer will be 28320. Okay, this will be your answer. Now, see, wholesaler ने shopkeeper को, we have to find the discount received by the shopkeeper. Shopkeeper received how much discount? Discount received by the shopkeeper. सो शॉपकीपर को होलसेलर ने कितने में दिया? 24,000 में. ठीक है, डिस्काउंट कैलकुलेट करते वक्त ये प्राइस मत लेना, टैक्स इंक्लूड वाली नहीं. डिस्काउंट के वक्त यही प्राइस लेनी है जो यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिख रही है. सो मीन्स होलसेलर ने मार्क प्राइस रखा था 30,000 बट ही गेव इट टू द शॉपकीपर एट 24,000. मीन्स कितना डिस्काउंट दिया है? यू कैन सी द डिस्काउंट ईयर, 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है. ओके, सो डिस्काउंट received by shopkeeper is mark price minus 24,000, that is 6,000. Okay, so 6,000 का discount मिला. And what will be the discount percent? Discount percent is discount upon mark price into 100, that is 6,000 upon mark price is 30,000 into 100. Okay, so 3 1s are 3, 20s are. So answer is 20%. Okay, answer is 20%. This was the second part of the question. The third part is very simple. Price paid by customer. So this I leave it for you. Okay, price paid by customer क्या होगा? कस्टमर ने मार्क प्राइस में लिया है 30,000 प्लस GST ऑन 30,000. सेल प्राइस प्लस GST, दैट मीन्स 30,000 प्लस 18% ऑफ 30,000. ओके, सो यू डू दिस कैलकुलेशन एंड राइट द आंसर हियर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 27. is easy. This question is not there in the new book. It is easy question. You can do it for homework. Okay, or you can pause the video now and solve it. Those who have the new book, I have sent the images of the old book in the group. You can also refer to those images. 27th is easy. Complete this sum. Next. Question number 28. In the new book, it is question number 18. ये न्यू बुक इतना पीछे क्यों चल रहा है? क्योंकि न्यू बुक में कुछ 3-4 क्वेश्चंस न्यू ऐड किए हैं. सो दोज क्वेश्चंस आल्सो वी विल डिस्कस इन द एंड. सो दोज हु हैव द ओल्ड बुक, उनको भी फ़ायदा होगा. दे विल गेट टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चंस. द क्वेश्चन सेज होलसेलर बाइज ए टीवी from a manufacturer for 25,000. So wholesaler buys a TV from a manufacturer for 25,000. He marks the price of the TV 20% above his cost price. So who marks? They are talking about the wholesaler. ठीक है, wholesaler ने
मैन्युफैक्चरर से 25,000 में टीवी लिया, ठीक है. नाउ उस बॉक्स पे, टीवी पे बॉक्स पे, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो मतलब ये जो 25,000 है उस पर 20% बढ़ा के उसने मार्क प्राइस बनाया. ओके, सो लेट्स फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ टीवी विल बी दिस 25,000 प्लस 20% इंक्रीज किया है, दैट मीन्स 20% ऑफ 25,000. ओके, क्या मार्क प्राइस था? लेट्स रीड इट अगेन. ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी, ही मीन्स होलसेलर, मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 20% above the cost price. Okay, so this is the cost price plus 20% of cost price. So 25 to 50, 5,000. So 30,000. Okay, so that means the mark price of the TV is now 30,000. Okay, whenever you get the answer, always write the rupees sign. Then they have said he marks the TV 20% above the cost price and sells it to the retailer at 10% discount on the mark price. The wholesaler sells it to the retailer at 10% discount on the mark price. Okay, so this cost price for retailer will be 10% discount on mark price. Okay, 10% discount means 90% of 30,000. I have explained you this. Okay, 10% discount बोलेंगे तो दो स्टेप करने से अच्छा डायरेक्टली 10% गया, मैं 90% बच गया है, डायरेक्टली फाइंड 90% ऑफ 30,000. ओके, दे हैव सेड क्लियरली दैट होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. ओके, सो दैट इज 27,000. सो दैट मीन्स होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट 27,000. ओके, इफ द GST पेड इज 28%, फाइंड द मार्क प्राइस. अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज टू फाइंड द मार्क प्राइस, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है. द रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग द टैक्स. सो रिटेलर ने कितने में लिया? 27,000 प्लस टैक्स. सो रिटेलर की कॉस्ट प्राइस 27,000 है. सो प्राइस पेड बाय रिटेलर विल बी retailer will be 27,000 plus 27,000 into 28%. ठीक है. टैक्स मीन्स मैंने बहुत बार बताया, प्राइस पेड मीन्स सेल प्राइस प्लस GST ऑन सेल प्राइस. ओके, सो दिस 0 विल कैंसिल एंड 28 into 270, multiply 28 with 270, you will get the answer as 7560. Okay, then add this 7560 with 27, so answer will be 34,560. Okay, copy this. This was the second part. Okay, the next question is find the GST paid by wholesaler. In the old book it is written GST paid by the wholesaler. Okay, just add here to state government. Okay, this is there in the new book. So old book, whoever has old book, just add this GST paid by the wholesaler to the state government. Now because this type of questions can come, so they have made a modification in the new book that they can ask you, see GST paid by wholesaler तो हमें पता है, बट कभी ऐड कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, बिकॉज इट इज प्रीटी सिंपल टू फाइंड द वैल्यू.
ओके, सो GST पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट पूछा है. पहले GST कैसे फाइंड करते हैं? GST इज 28% ऑफ होलसेलर. होलसेलर क्या है? होलसेलर मिडिलमैन है. सो होलसेलर ने कितना प्रॉफिट किया है? 25,000 में लिया, 27,000 में बेच दिया. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होलसेलर? 2,000 रुपीज. ओके, सो दिस इज 28% ऑफ 2,000, that is 560 rupees. Okay, but this is the total GST. हमें क्या चाहिए? GST paid by the wholesaler to the state government. तो आपको पता है कि जो GST होता है that it is divided in two parts, CGST and SGST. Okay, CGST and SGST. So ये जो 560 rupees है, out of which 280 rupees will go to the central government and 280 rupees will go to the state government. ओके, सो यहाँ पे पूछा है GST पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो GST टू द स्टेट गवर्नमेंट विल बी 560 अपॉन 2, दैट इज 280 रुपीज. अंडरस्टूड? कैसे थोड़ा स्मॉल चेंज किया है क्वेश्चन में सिर्फ. दिस कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस. सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पूछा है, ठीक है, तो 28% टोटल है, तो आप उसका 14% भी फाइंड कर सकते हो. 14% ऑफ प्रॉफिट. ये ऑल्टरनेटिव मेथड है. मे बी इन स्कूल और समवेयर एल्स दे में गिव यू लाइक दिस कि अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पूछा है तो जो रेट है GST को उसको हाफ कर दो. सो देन फाइंड 14% ऑफ 2,000. यू विल आंसर गेट द आंसर एज 280. ओके, सो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. ओके, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पूछा है इसीलिए. अगर ये नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ इतना पूछते GST बाय होलसेलर, तो इट द आंसर वॉज 560. Okay, if they ask state government or central government, it is 280, 280. दोनों का पूछा तो दोनों का लिखना होगा. To state government it is 280, to central government it is 280. Okay. Next question, we will solve question number 30. In the new book, it is question number 20. 29 is not there in the new book, question number 29. So that we will do it later. It is a good question. So let's do this. A wholesaler buys a clock from a manufacturer for 4,000. So a wholesaler buys a clock from a manufacturer at 4,000. This question is similar to the one we did before, the previous question. He marks the price of the clock 25% above the cost price. So wholesaler marks the price 25% above the cost price of the clock. Okay, so let's find the mark price. Mark price of the article will be 25% above 4,000. So it is 4,000 plus 25% of 4,000. Okay, that is 4,000 plus 1,000, 5,000. So the mark price is 5,000. Okay, now he marks the price 25% above his cost price and sells it to the retailer at 10% discount on mark price. So the wholesaler sells it to the retailer at 10% discount on mark price. Okay, so the CP of retailer will be 10% discount on mark price. 10% discount on mark price means 90% of 5,000. Okay, so what is 10% discount on mark price? It will be 4,500. Okay, so wholesaler sells it to the retailer at 4,500. This was our first part to find the mark price. Okay, second part, we have to find the price paid by retailer. So what will be the price paid by retailer?
price paid by retailer will be this 4,500 plus GST on 4,500. So 4,500 plus, actually the rate of GST is 18% in the question. Okay, so 18% of 4,500. Okay, that is 4,500 plus, multiply 18 into 45. You will get the answer as 810. When you add 810 to 4,500, your answer will be 5310. Okay, this will be the price paid by the retailer. Now we have to find the GST paid by the wholesaler. The GST paid by the wholesaler. Now in this question, they haven't said the GST paid by the wholesaler to state government और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बोला नहीं है, ठीक है, तो मतलब फुल GST फाइंड करना है. सो GST पेड बाय द होलसेलर विल बी 18% ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय होलसेलर. करेक्ट, बिकॉज होलसेलर इज अ मिडल मैन, सो वो तो प्रॉफिट पे GST पे करेगा. ठीक है, जब टोटल GST की बात आएगी, GST पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट अगर पूछेंगे तो वो प्रॉफिट पे करेगा. ठीक है, एंड जब अगर प्राइस पेड पूछा होता, प्राइस पेड बाय होलसेलर, तो इट विल बी 4,000 प्लस GST ऑन 4,000. ओके, तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो हियर 18% of what is the profit of wholesaler? See, he bought the article at 4,000 and sold at 4,500. So he made a profit of 500. Okay, 0 0 cancel, 18 5 are 90 is the answer. Copy the question. Now next, the question number 32. Okay, in question number 32, those who have it is in the new book, it is question number 21. Those who have the old book, now you have to make a correction here, that the GST rate in this question is 28%. Okay, those who have the old book, make this correction. Okay, new book में it is given as 18%, that is correct, because old book में जो पीछे आंसर दिया है वो according to 28% दिया है. ठीक है, and new book में जो पीछे आंसर दिया है वो according to 18% दिया है. Okay, so you have to refer to your book. Okay, what question बहुत simple है, just I wanted to make this correction, that is why I came on this question. Pawan purchased a washing machine when a discount of 5% was given on its mark price of 42,000. So mark price is 42,000. Okay, Pawan got a discount of 5% on the mark price. So what will be the cost price of Pawan? 5% discount मिला, means we have to find the 95% of 42,000. Okay, 95% of 42,000. Your answer will be 39,900. Okay, so this was the sale price for Pawan. Okay, ये उसका सेल प्राइस था. So means Pawan ने कितने में आ रहा था उसे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इतना. अब जब वो बिल पे करेगा तो ही विल हैव टू पे GST ऑन दिस. डेफिनेटली ही हैव टू पे द GST. सो द प्राइस पेड बाय Pawan
what is price paid? Price paid is 39,900 plus what is the rate of GST? जिनका old book है, use 28% into 39,000. Okay, and those who have new book use 18% here and find your answer. No, just a minute. Price paid नहीं पूछा है. हाँ, price paid पूछा है. Yes. So price paid by the Pawan. Yes. So those who have the old book, they will get the answer as something like 51,072 rupees. Okay. And those who have old book, who will take 18%. Sorry, जिसके पास न्यू बुक है जो 18% लेगा यहाँ पे, they will get the answer as 47,082. ठीक है. So ये आंसर्स आएंगे आपको. जिनके पास न्यू है यहाँ पे 18% लेके सॉल्व करना. जिनके पास ओल्ड बुक है टेक 28% है. यू विल गेट दिस आंसर. ओके. Now they are asking you in the second part. This was the first part. Now they are asking you to find the amount of CGST and SGST paid. Okay, the amount of CGST, SGST shown in the invoice. Okay, मतलब CGST, SGST अलग अलग चाहिए. ठीक है. तो पहले तो GST फाइंड कर लो. So GST will be टोटल GST पूछा है. सो टोटल GST का मतलब होता है द GST ऑन द दिस प्राइस. कस्टमर जो प्राइस में खरीद रहा है. ठीक है. दैट मीन्स इट इज 28% ऑफ 39,900. दिस विल बी द GST. ओके. जिसका न्यू बुक है यू विल हैव 18% ऑफ 39,900. फाइंड दीज वैल्यूज. Okay, so here whatever answer you will get, for example here you will get the answer as 11,172. Okay, now you have to divide this into two parts. So CGST will be 5586 and SGST will be 5586. Okay, in the same way those who have the new book, they will have to find 18% of 39,900. So you will get the answer as 7182. And then you have to divide this by 2. So your CGST will be 3591 and SGST will also be 3591. Okay, so as per your textbook, you can find the answer to this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन कि पहले प्राइस पेड फाइंड करो एंड फिर CGST SGST फाइंड करो. ओके. That's it for today. The next video will complete the remaining questions. There are a few questions left. 2, 3, 4 new questions of the new book and 1 or 2 old questions. So in all, the next video will complete the chapter.